हेलो एवरीवन। आज फिर से आई वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन चैनल, आपके अपने चैनल में जिसका नाम है साइंस प्लस टीवी। टुडे आई हैव ब्रॉट another simple yet important topic for you guys, जो हमारा बेसिक्स बनता है फॉर फर्दर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो टॉपिक आज मैं शुरू करने वाली हूँ, इसमें वी आर गोइंग टू लर्न द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि यू विल स्टडी इट टिल यू स्टडी केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें हम बेसिकली एज आई सेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम ये जरा स्टडी करेंगे दैट हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद द केमिस्ट्री। ओके, केमिकल्स की स्टडी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे रोल प्ले कर रही है। सो हियर द टॉपिक इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम काफी बेस से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम आवर 6th क्लास दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट्स सिंपली द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के वी हैव स्टडीड मेनी इफेक्ट्स, right? Heating effect, magnetic effect, right? In our previous classes. In our previous classes, we have also studied about conductors and insulators. हमने ये पढ़ा that the substances that allow electricity to pass through them, वो होते हैं conductors, और वो substances जो अपने अंदर से electricity को flow नहीं होने देते हैं, they are known as insulators. Okay? तो आज हम इसी टॉपिक को फर्दर स्टडी करने वाले हैं, जिसमें we will study the chemical effects of electric current, that when electricity is passed through any substance, what kind of chemical changes it brought about. Okay, students, so before I start my lesson of today, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ that ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पे you can get all the small topics explained in a simple way, just free of cost. You don't have to pay anything like you pay for tuitions and all. So यहाँ पे I try to help you on my own. Okay, so let's start. So very first thing that I want to remind you all that conductors and insulators, when we talk about, we are talking about the solids, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का रीजन होता है, that is the flow of electrons. In case of solids, the flow of electrons is responsible for their conduction or their insulation, right? But when we talk about liquids, the thing comes to a different situation. Liquids जिनसे electricity pass हो सकती है, those liquids are basically known as electrolytes. Okay, the liquids that allow electricity to flow through them are known as electrolytes. ठीक है, अभी in the very beginning I told you about electrochemistry. तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स that electrochemistry is the branch of science that deals with the effect of current, with the effect of electricity on different chemical changes, that what kind of chemical changes are observed when electricity is passed through a liquid. Okay, now let's talk about electrolytes. Okay, electrolytes are those liquids which allow electricity to pass through them, and the others are known as non-electrolytes. अभी electrolytes के examples कौन कौन से होंगे? Salt solution, acid solution, base solution. Okay, these are all the electrolytes, right? Talking about the non-electrolytes, non-electrolytes में आएंगे sugar solution, oils, sugar solutions and oils. Okay, किसी भी type के oils हों. Now let's explore that why
these solutions are electrolytes while these are not. हम समझेंगे कि what is the reason for their conductivity or non-conductivity. So while studying this, I will let you know that whenever we have a solution, मान लीजिए we have a compound NaCl, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, simple common salt, and we dissolved it in water. When we dissolve it in water, तो वो जो solution बन जाता है, because it is a solution in water, तो उसको हम बोल देते हैं aqueous solution. तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड अपने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है, तो इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, दे गेट्स सेपरेटेड. मतलब ये जो कंपाउंड है इट डिसोसिएट्स. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इट ब्रेक्स इनटू its ions, and that's why these ions becomes responsible for the flow of electricity through the electrolytes. Okay, now you got to know that the ions, presence of ions is the reason for the conductivity in case of electrolytes, right? In case of an acid, say HCl, when we take the aqueous solution of HCl, again the same situation comes, H positive, Cl negative. It again breaks, dissociates into ions and hence becomes a electrolyte. Okay. अभी देखेंगे NaCl अगर aqueous solution में electrolyte है, is it electrolyte in the solid state also? Let's see. NaCl if we take in solid form. So in that case, my dear students, this is a very important point to be noted. Question कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में that why solid sodium chloride is a non-electrolyte while molten or aqueous sodium chloride is an electrolyte. तो इसका सीधा सा आंसर ये है that whenever sodium chloride is in the solid state, अभी solid state में क्या होता है? The particles are very tightly packed. Intercellular space is very very less. Right? तो उस केस में क्या होगा? Because there is a very much force between the sodium and chloride ions and they do not dissociate. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड. जब हमसे पूछा जाता है कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स के बारे में, देन सोडियम क्लोराइड सॉलिड इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज it do not dissociates in the solid form, right? But when in the aqueous state or in the molten state, जैसे ही वो liquid state में आ जाता है, the more space is present between the particles, जो इनके electrostatic attractions होते हैं, they become weak and it dissociates easily. ठीक है? In case of NaCl liquid, मतलब हम सोडियम क्लोराइड को लें और उसे मेल्ट कर दें हाई टेम्परेचर पे, तो लिक्विड स्टेट में इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द आयंस, इट विल ऑल्सो रिलीज द आयंस एंड becomes an electrolyte. In case of non-electrolytes, my dear students, the same situation occurs that they do not dissociate into ions. जैसे हमारा शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन or the oils, both of them are generally non-polar solutions. अभी non-polar और polar का क्या मतलब है? polar का मतलब होता है जैसे NaCl एक polar substance है, इसमें there is one positive ion and one negative ion. That means there are two poles, positive pole and negative pole. So it is a polar substance. But sugar solution and oils are non-polar substances, so they do not conduct electricity. They do not release ions in their solutions. Hence, they are known as
non-electrolytes. I hope the concept is very much clear to all of you. Okay, further I will be explaining later on the very important topic electrolysis. आज के लिए इतना ही. आई होप आपने इंजॉय किया होगा और आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा. ओके, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस ये पहले से आपको पता है. लेट मी गिव यू वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट पॉजिटिव आयंस आर नोन एज cations and the negative ions are known as anions. This is a very important point to be noted. So always watch the videos till the end because end में कई बार मैं कुछ important चीजें discuss करती हूँ. So stay connected and stay healthy. Take care everybody. Bye bye.